Good afternoon, everybody. Namaste, and we welcome you all to this public health lecture on Autism Awareness Acceptance Month. The theme for this year is transforming the narrative, contributions at home, at work, in the arts and in policy making. ऑटिज्म संबंधित दृष्टिकोण को बदलना है घरेलू कार्यस्थल कला एवं राष्ट्रीय नीतियों के ऑटिज्म प्रभावितों के समक्ष. तो ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल, ऑटिज्म प्रभाविती के सामान्य धारा में समावेश. We are very grateful to our director, sir, to have graced the occasion. Director, sir, can you please join us on the stage with our HOD, Dr. Arvind Bagga, Dr. K.R. Vaideshwaran from National Trust, Joint Secretary and CEO, National Trust, Dr. Shubhanki Vaidya, a parent advocate, but a senior professor from Neuro, my fellow colleague, Dr. Vishnu Chakravarti and Dr. Prashant Johri, Dr. Gagan Hans from Psychiatry, Dr. Gautam and Dr. Sanjita. So, we will just start with the lamp lighting and Saraswati Vandana. Before we reach that, I will request Divansh, can you just welcome everybody with a small song. Meanwhile, we proceed. Idhar aaiye, please. Divansh has been singing professionally. Yeah. Meanwhile. रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे. रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे. क्यों सोचना है जाला कहाँ, चाहे वही ले जाए जहाँ. बेसब्रियाँ 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 बेसब्रियाँ. कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे एहसास है. जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तश्नगी है, ये प्यास है. क्यों रोकना अब ये कारवां, चाहे वही ले जाए जहाँ. बेसब्रियाँ 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 क्या ये उजाले, क्या ये अंधेरे, बोलो से आगे है
तेरे क्यों रोशनी तू बाहर तलाशी तेरी मशाले है अंदर तेरे क्यों ढूंढना पैरों के निशान जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियां 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 So we will just, request him and other dignitaries to release patient information booklet है intervention के लिए English और हिंदी में, and then we will request sir to give some words of wisdom.
Thank you. Good afternoon, everybody. Respected Professor Baga sir and Professor Shifali and all the dignitaries on the dais and off the dais, parents and special children. I think the first thing is that we must give a big hand to this team which has done such a wonderful job, something which has gone through the exhibition and a lot of educational material and everything. This will go a long way for all the people who will need this kind of help. In fact, she was saying that she will put it in other languages of the country also, the southern languages and all that. This will help a lot for all of us. I think the most important thing I'm looking at that this platform and today, it has given us the strength to us. That is something which is very important, because I know that, we are so scared to discuss, so shy to tell somebody, and then we don't have support. Unless you tell, nobody will support you. This is the problem. So I think that this kind of platforms, patient education, meetings, group discussions, and the patient groups, their parents, and the doctors connecting to that, I think they go a long way in this kind of problem, because it is something which is very chronic. It is not like acute problems where, you get rid of this by either medicines or surgery. So this is something which is very important, and then this kind of initiatives were not there in our country. And I think I should congratulate the team. And then my request to all of you is that take use of this, discuss with people, come out of this thing that, we have been, that kind of stigma attached to that, and form a group, get more and more people who have this kind of problems, and then do activities. The way he sang better than most of us here. So that is something which we need to appreciate, and I think we give a big hand to him. That is something which we need to appreciate. Every human being has some potential. I think God has given us that potential, and then that potential has to be appreciated. That's how we will move forward. With this, I once again congratulate the team. Thank you. Thank you, sir. Dr. Baga, I will request you to hand over a memento to sir. We always design a memento in every public health lecture, and on the top is Autism Awareness Acceptance Month, Autism Jagrukta Swikriti Ma, and transforming the narrative, contributions at home, at work, in the arts and in policy making. Autism संबंधित दृष्टिकोण को बदलना है, घरेलू कार्यालय, कला एवं राष्ट्र नीतियों के ऑटिज्म प्रभावितों को समावेश, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड, ऑटिज्म प्रभावित के सामान्य धारा में समावेश, एंड ब्रेकिंग द मेज फॉर एवरी पेरेंट, भूल भलैया से सुलझाना है, एंड वी ऑल आर टुगेदर इन इट, एंड वी हैव टू डू. So this is a memento which we designed to remember every day and remind us that, we have to work for all. All 5 fingers are not same, and it is that we don't talk about normal, abnormal. We don't talk about neurotypical and special needs. We talk about neurodiversity. So we are all diverse, and we are 5 spectrum. 5 fingers are different. So we are at the borders of the spectrum, and each child who is born with anything has the equal right to life, like we all of have. And you are not doing a favor to anybody. And only one message in front of respected director sir. The problem is anybody has a medical condition becomes a disability because of the environment, which may be physical, which sir is trying to rectify, but which is also which is about the humans around you. The attitude of the humans around you make you having a special needs or disability becomes. So because we can modify the human attitude, everybody can decide and change the attitudes. Everybody, humanistic aspect is very important. It's our duty, sir, I think, and that is how we can make a impact in the world. Thank you so much for gracing the occasion despite your busy meetings and high level meetings, sir. Thank you so much, sir. Dr. Baga sir, your address should have been before that. Yes. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू. सबका बहुत बहुत यहाँ स्वागत है हमारे इस लेक्चर के लिए. आज हम ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे और जो मेन समस्याएं हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं. एंड आई वुड लाइक टू थैंक शेफाली एंड हर टीम फॉर हैविंग लेड ऑल दिस वर्क. So Shefali, Biswaroop, Prashant,
and the team from the All Indians, from our department, you know, they're already been advocates and leaders in trying to advocate awareness and now acceptance of autism. And clearly, I think the theme is centered on that. तो डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, सारे पैनलिस्ट, मेरे कोलीग्स, फैकल्टी, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर दादा, डॉक्टर मैम, आपको भी सबको आई थिंक थैंक यू वेरी मच। पेरेंट्स के लिए भी, प्रेस से जो लोग आए हैं, और जो मेरे फैकल्टी के बाकी कोलीग्स हैं, और पेरेंट्स और उनके बच्चे, आप सबका बहुत स्वागत है कि आप सब यहाँ पे हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट, एंड वी होप दैट दिस डिस्कशन ड्यूरिंग दिस नेक्स्ट half an hour or so does lead to questions and probably answer some of your questions. Thank you very much, Shefali. Thank you, sir. Gautam, the slides. So we will now start with the panel discussion. So firstly, I thank Dr. K.R. Vedeshwaran to have joined us at a short notice. He's a Joint Secretary and CEO National Trust. So he's there to tell us about, you know, what we have from the government. So now, so before we proceed further, before we proceed to the question answer, just wanted, we all understand कि autism spectrum disorder क्या एक spectrum है, हर एक में हर चीज़ नहीं होती है, social interaction और communication का issue है, और इसका जो prevalence है, अभी विदेश में 24 मार्च 2023 में 1 in 36 है CDC का data, और हमारा हिंदुस्तान का data is 1 in 89 collected in the year 2011, जो incline study हमने की थी. Boys are affected 4.5 times more than girls. This is very important. There are a lot of factors which genetics, environmentals and epigenetics. And I personally feel जो environmental factors वो gene expression को affect करते हैं, that may be the intervention targets which will be there. So we have to identify what are these environmental things which are there, and the exposure. You know, you keep talking about the air pollution winter months में, तो भूल जाते हैं कि autism का third trimester pregnancy में exposure to air pollution has been shown to be an association, having maternal use of whether of valproate or certain neuropsychiatric medications, and also हमारे जो खाने में pesticides है हमारे contaminations है, उसके साथ correlation दिखाया गया है. So that is something important and we have to go ahead. And diagnosis is clinical. कोई fancy टेस्टों की ज़रूरत नहीं है. This parents should understand that no fancy tests are required and clinical diagnosis है, जिसके लिए हमने सोशो कल्चरल सेंसिटिव टूल्स बनाए हैं, क्योंकि जो हमारे ये जो ऑटिज्म है, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन है, सामाजिक आवभाव में और संचार में गुणात्मक हानि, और जो रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ इंटरेस्ट है, जो दोहरावनीय बिहेवियर होते हैं, ये सारी चीज़ों के अंदर बेसिकली सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं. तो उसके लिए हमारा अपना टूल है जो एम्स मॉडिफाइड इंक्लिन टूल है, जो कि DSM-5 बेस्ड है, एंड वो मोबाइल ऐप में है, पर वो पेरेंट्स के लिए नहीं है, प्रोफेशनल्स के लिए है. जनरली हम क्या कारण से ऑटिज्म है उसी के लिए टेस्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ कभी किसी सिचुएशंस में जेनेटिक टेस्ट करते हैं, कुछ कंडीशंस में न्यूरोमेटाबॉलिक करते हैं या इमेजिंग करते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या कारण है. कई बार ट्यूबरस स्क्लेरोसिस होता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस होता है, फ्रेजाइल एक्स होता है, डाउन सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, DMD, ये सब एसोसिएटेड है. लेकिन अगर बच्चे में हम लोग ईजी तब करते हैं अगर दौरे पड़ रहे हैं, या अगर किसी को बोलना वो छोड़ देता है, या उसके बिहेवियर के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, या जनरली क्या होता है जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं वो 18 से 24 महीने में बोलना कम करते हैं. तो लेकिन ये बच्चे अगर लेट ऑनसेट में करें तो हम ईजी करते हैं, और इसमें ईजी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है कि स्लीप ईजी होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप ईजी और में ही वो फाइंडिंग्स दिखती हैं. और जो ट्रीटमेंट है, बेसिकली मुद्दा ये है कि जो कोर इंटरवेंशन है बिहेवियर इंटरवेंशन है, जिसमें ABA, सेंसरी इंटीग्रेशन और स्ट्रक्चर टीचिंग्स आगे मेन है, और बहुत सारे और थॉट प्रोसेसेस हैं और बिलीव्स हैं, पर बेसिकली जो कोर सिम्टम्स को इफेक्ट करते हैं. लेकिन ओनली कोई लिमिटेड सिचुएशन में दवाई का देना होता है, जहाँ की बच्चा एग्रेसिव है, तोड़फोड़ ज़्यादा कर रहा है, या बच्चे को हाइपर एक्टिव है, इनअटेंशन है, दौरे पड़ रहे हैं, या स्लीप ऑनसेट लेटेंसी है, मतलब जब सुला रहे हैं तो वो लेट टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है सोने के लिए. अदरवाइज बेसिकली इट इज़ ओनली बिहेवियर इंटरवेंशन, जिसके बहुत सारे वेज हैं. तो ये मोबाइल ऐप है जिसके अंदर डायग्नोस हो सकता है. पेरेंट इन्फॉर्मेशन और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी बुक्स बना रहे हैं हम फॉर द लास्ट 15 years विच हैव बीन रिवाइज्ड, एंड
एंड आज भी उसका एक रिवीजन है कि हमारी वेबसाइट है www.pedneuroaims.org. PED मतलब बच्चा, न्यूरो मतलब ब्रेन एंड .org, pedneuroaims.org. तो उसमें सारे बीमारियों के लिए है, ऑटिज़म के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए भी अलग एक टैब है, पेरेंट्स कॉर्नर है, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पेरेंट्स के लिए. अभी आपको बताना चाहते हो कि सिर्फ बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के हम लोग ने कुछ डिवाइसेस बनाए हैं, आई ट्रैकिंग के साथ, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के साथ बनाया है, कुछ रोबोटिक्स से कर रहे हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस से कर रहे हैं. तो ये सारी नई चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए हम लोग अभी रिसर्च मोड में कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द लाइफ एंड विल probably हैविंग some more of these routinely available. अभी हमारे पास सर्विस मोड में है, नहीं है, हमारी सर्विस मोड में, रिसर्च मोड में ही है. तो बेसिकली काफ़ी सारी हम लोग इनोवेशंस कर रहे हैं. जो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का है वो सिर्फ बच्चों के प्रिडिक्शन स्किल्स वगैरह इम्प्रूव करने के लिए है और रोबोटिक्स के ऊपर है. और उनका क्या, और दूसरा हमने देखा, हमने एक बनाया था, जैकेट बनाया था, कंप्रेशन जैकेट, जिससे उसका जो हाइपर एक्टिविटी कम करी गई है इन बच्चों में. तो ऐसे ये वाला प्रिडिक्शन एबिलिटी का है. ये सारों का अभी हमारा, आप लोगों को जो हमारे पास एम्स में आ रहे हैं उनको, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रायल एंड ये सारी चीज़ें एक्चुअली फैक्ट में है एंड दे विल बी इम्प्रूविंग द लाइफ्स ऑफ दिस चिल्ड्रन. एंड एक और चीज़ है कि कई बार ये लोग बोल नहीं पाते हैं तो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन की ऐप बनाई जा रही है. और हमारी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज तो है 24/7, टेली हेल्पलाइन है, और टेली कंसल्टेशन, टेली हेल्पलाइन तो कोई भी फ़ोन कर सकता है, और टेली कंसल्टेशन जो हमारे फॉलोअप पेशेंट हैं. पर अभी हम एक रिसर्च मोड में हम एक मल्टीलिंगुअल टेली कंसल्टेशन शुरू कर रहे हैं कि आप अगर कोई और लैंग्वेज में भी बोलें तो हमारी जो नर्सिंग स्टाफ उसको इंग्लिश और हिंदी में रिप्लाई करेंगे. तो उसका एक रिसर्च चल रहा है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और ये सारा चीज़ों का चल रहा है. तो आई जस्ट, दिस वाज अ वेरी ब्रीफ 4 minute थिंग जस्ट टू टेल यू कि एडवांसेस हो रही हैं एंड वेयर वी स्टैंड. ऑटिज़म तो हमारे को चॉइस से नहीं हुआ है, पर अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो चॉइस से. और मैंने देखा है कि कई बार पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दैट बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें एक्सेप्ट करना है, तभी हम आगे सोसाइटी के एक्सेप्टेंस से बारे में बात करेंगे. तो कमिंग टू द पैनल, कैन आई हैव द पैनल स्लाइड. तो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव मेड 5-6 एरियाज जिसके अंदर वील बी गोइंग. जो हमने 5-6 मुद्दे रखे हैं, कीपिंग इन माइंड द मेन थीम. Yeah. So transition of care in autistic child. तो ट्रांजिशनल केयर क्या है और व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एज फॉर इनिशिएटिंग ट्रांजिशनल केयर. डॉक्टर गगन, आई थिंक आई वुड रिक्वेस्ट यू कि बिकॉज आप साइकेट्रिस्ट हैं, तो हम लोग, बिकॉज हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ही हम इनको देख रहे हैं, तो किस समय हमें इनको आपको हैंड ओवर करना चाहिए फॉर्मली. क्योंकि एक और चीज़ देखी गई है कि बाकी सारी कंडीशंस में भी जो बच्चों की है, नॉट ओनली न्यूरोलॉजी और ऑटिज्म, पर जो भी पीडियाट्रिक कंडीशन है, देयर इज़ अ कंसर्न दैट जब वो बच्चे एडोलेसेंट होते हैं, उसके बाद एडल्टहुड में जाते हैं, तो वो थोड़े से लावारिस से हो जाते हैं. वो एडल्ट वालों के पास जाना चाहते हैं, ना हमें छोड़ना चाहते हैं. और हम भी 30-32 ईयर्स को भी देखे जा रहे हैं अभी बोल बोल के कि हमें भेजना है. तो वी हैव टू मेक फॉर्मली दिस थिंग टू ट्रांजिशन. तो डॉक्टर गगन, यू विल एडवाइज अस कि हम ट्रांजिशन कब करें. इट शुड बी फॉर्मली डन विद ड्यू रिस्पेक्ट and to everyone. Yeah, thank you, ma'am, for the question, and thank you for this opportunity to speak. जहाँ तक हम ट्रांजिशन केयर की बात करते हैं तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. इट्स नॉट लाइक दैट ये एक टाइम पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आप डिसाइड करोगे कि अब ट्रांजिशन का समय आ गया है. ऐसा नहीं है. ये एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है जो ओवर द ईयर्स चलेगा. आइडियली जो ट्रांजिशन का प्रोसेस है उसकी तैयारी 12 साल की उम्र से. काफ़ी सारी जो रिसर्च है उसमें इस तरह का मतलब एक पाया जाता है कि आइडली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट द एज ऑफ 12 बिकॉज दिस इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. ये इसमें समय लगेगा. आप एकदम से ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं और ट्रांजिशन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा बच्चे पे अगर आप इमीडिएटली ट्रांजिट करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि आप देखिए जहाँ तक जो भी जहाँ तक काउंसलिंग का सवाल है या बाकी जो स्कूल से एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बच्चे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं, तो वो
एक पॉइंट पे आके 17 से 18 साल पे आके वो ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर बच्चा पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है ट्रांजिशन के लिए, पेरेंट्स पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है ट्रांजिशन के लिए, तो ये ट्रांजिशन बहुत एब्रप्ट हो सकती है और बहुत केओटिक हो सकती है। मतलब इसमें बच्चा जो है उस पर और पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए इसकी तैयारी आइडियली 12 साल की उम्र से स्टार्ट कर देनी चाहिए और ग्रेजुअली मतलब इसको टाइम लेना चाहिए पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, सो दैट टू ट्रांजिट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बेसिकली क्या होता है कि कॉन्फिडेंस होता है आपके जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो फिर वो अगर हम फॉर्मली उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो बेटर रहता है। व्हाट आर द कॉमन फियर्स पेशेंट्स में क्या है, अगर उनमें क्या उनके अंदर डर होता है, क्या उनके अंदर एंग्जाइटी होती है ट्रांजिशन केयर के लिए, एंड और हेल्थ प्रोफेशनल्स को भी क्या होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर गागर एंड देन डॉक्टर बिश्वरूप टू ऐड, बिकॉज हमें ट्रांजिशन करने वाले हैं और वो रिसीव करने वाले हैं, तो बोथ वेज। जैसे मैंने पहले बताया, ये बहुत डायनेमिक प्रोसेस है। अगर आप पहले से तैयारी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, बच्चे को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, फैमिली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है, तो ये अचानक से एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। क्योंकि जो भी बच्चे को जो वेलफेयर स्कीम्स में जो उसको वेलफेयर मिल रहा है, वो सब somehow it is all tied with the education system, with the schooling, all the welfare, all the counseling, all the special training which the child is receiving. And once that stops abruptly और ट्रांजिशन के लिए तैयार नहीं है बच्चा, दिस इज़ इन मल्टीपल डोमेन्स, ये मल्टीपल डोमेन्स में हो रहा है। ये सिर्फ एजुकेशन के स्फेयर में नहीं हो रहा है, हेल्थ के स्फेयर में हो रहा है, सोशल स्फेयर में हो रहा है। सो बहुत सारी अनिश्चितताएं बच्चे के मन में या फिर पेरेंट्स के मन में आ जाएंगी कि ये चेंज अब कैसे होना चाहिए। सो इसके लिए पहले से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। और अगर अचानक से ये चेंज किया जाएगा तो इसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं आ सकती हैं, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल हो चुका है। अब वो अचानक से अगर वो ट्रांजिट करेगा, सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर गोइंग टू चेंज। और जैसे हम सब जानते हैं कि जो बच्चे में ऑटिज़म है वो चेंज को इतना पसंद नहीं करते हैं या वो चेंज को इतना अच्छे से बियर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस चीज़ की तैयारी पहले से रखिए। इट शुड बी ग्रेजुअल, एक ग्रेजुअल हैंड ओवर होना चाहिए फ्रॉम लाइक फ्रॉम अ पीडियाट्रिशियन टू अ साइकाट्रिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 3 or 4 years or maybe more than that, gradually and very slowly. Thank you, Dr. Gagan. And before I ask Dr. Bishrup, Dr. Bagga sir, generally pediatrics to adults transition के लिए आपका क्या रहेगा? Because parents को भी होता है ना, वो pediatrician से थोड़ा सा वो attachment होता है, and फिर वो fear of unknown. I mean, how do I you think guide? what Gagan said, it has to be a process rather than a discrete age. And 12 है या 14 है या 16 लेना है, हर यूनिट पे अलग अलग डिपेंड करेगा, बिकॉज ट्रांजिशनल केयर बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती जा रही है, स्पेशली जब आप क्रॉनिक केयर कर रहे हो तो। एंड इट हैज़ टू बी अ प्रोसेस। आइडियली एक डिपार्टमेंट जहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ भी आइडियली दे शुड बी जॉइंट क्लिनिक्स, शुरू में। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो हम संभव कर नहीं पाते जॉइंट क्लिनिक्स, कि अगर आप एक बच्चे को भेज रहे हो न्यूरोलॉजी के साथ, तो हमारा एक जॉइंट क्लिनिक होना चाहिए अडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट का, या जो भी स्पेशलिस्ट है, और जो इसको इकट्ठे देख पाए, बच्चे को कॉन्फिडेंस उसी में आएगा। बिकॉज क्लियरली ट्रांजिशन एक ऐसा टाइम है शिफाली, जब क्योंकि जिस तरह हम बच्चों को देख रहे होते हैं और जैसे एडल्ट फिजिशियंस देखते हैं, काफ़ी अंतर है। उनके पास नंबर इतने ज़्यादा हैं, यहाँ आपको बच्चों के नाम याद होते हैं, वहाँ आप पेशेंट की तरह जा रहे हो। सो एक ये प्रोसेस होना चाहिए। एंड समहाउ अगर हम कर पाएँ जॉइंट क्लिनिक्स, तो वो एक बड़ा मेजर चीज़ होगा। सर आई थिंक आई एग्री विद यू टोटली कि वो एडोलेसेंट ग्रुप में ना वी शुड हैव जॉइंट क्लिनिक्स विद जहाँ पे भी हमें करें ट्रांजिशन, बिकॉज एक पीडियाट्रिशियन का वे ऑफ लुकिंग एट अ चाइल्ड एंड द फैमिली इज डिफरेंट देन एन एडल्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ऐसा नहीं है। और हमें एक्चुअली कई बार मेरे को नाम याद भी नहीं रहे, पूरी फैमिली की सारी स्टोरी पता होती है, बिकॉज दे हैव कन्फाइडेड इन यू, क्या इश्यूज रहे, क्या कैसे फैमिली काउंसलिंग करनी है, किसको क्या बोलना है, तो वो सारी डायनामिक्स पता होती हैं, बिकॉज दे हैव हैड कॉन्फिडेंस इन यू। Bishru, specifically to autism, you want to add something? Thank you, ma'am. मुझे ऐसा लगता है कि we have discussed everything, but there is one point, like as Bagga sir and Dr. Gagan had also highlighted, कि हमें flexible रहना चाहिए in terms of the age at which transition should happen, particularly from the point of view of autism. क्योंकि बाकी जो बीमारियां हैं उसमें ये होता है कि ठीक है, इस एज के बाद हमें जो अडल्ट देखते हैं वो देखना शुरू करें, बट ऑटिज्म इज़ अ कंडीशन।
So in that situation, for each child, the time for transition to, an adult physician to see or an adult doctor to see would be different for different child. So I think autism के case में हमें थोड़ा flexible भी रहना पड़ेगा, depending on adolescent health issues and other issues, कि at what point of time they should be transitioned to psychiatry or neurology. So this was my point, ma'am. Thank you. Thank you. What are the existing policies in India, sir, to support these children? तो national trust के लिए क्या है सर, आप कुछ बताएंगे सर? और एक बहुत नेशनल ट्रस्ट जब बना था तो एक मेन था ना उसके अंदर की गार्डियनशिप इश्यूज, व्हाट आफ्टर मी? Yeah. Actually, I am from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, under which the National Trust comes. The department as a whole deals with 21 types of disabilities under the auspices of the Act. The entitlement, the facilities to be, rights to be provided to them, and how to enable those facilities to be actually put into practice. National Trust deals with mainly 4 types. 3 of them are autism, cerebral palsy, and intellectual disability, and multiple disability, which may mean one or more of any of these conditions. Now, from our point of view, basically, we try to help facilitate that inclusiveness. The way society looks at them, the way the persons with disabilities look to the society for help and assistance. These are the main areas of concern. From the trust, from the department side, number of activities are there ranging from provision of legal rights, removal of discrimination and stigma, assistive devices, scholarships, name it, you have it. Interaction, coordination with various ministries for providing various types of facilities, accessibilities, etc. From the National Trust, we focus on basically 2 things. One is welfare schemes, which we implement through our NGOs. हमारा NGOs है registered with National Trust about 540. Of them, 150 we give assistance, financial assistance in one form or other for various schemes. Basically, हम support करते हैं day care and residential care facilities to persons with these disabilities. The daycare would comprise children who need that, that early schooling facility, those who are not able to attend regular schools, to prepare them for that, and those who have crossed that stage beyond the age of 10, 0 to 10 and beyond 10. Residential is for the more serious category of people who face these challenges, which can be some kind of a respite scheme ranging over a few months to a year and then permanent. Those who have to stay in the care of an NGO, those who don't have anybody else to take care of them. So these come under the welfare schemes. Then we also provide the Niramaya insurance scheme with a cap of 1 lakh per annum at a very nominal insurance premium through the Oriental Insurance Company. So we facilitate provision of insurance for not only hospitalization but also for OPD consultations, transport, which are not available in other forms of insurance schemes. We provide, we enroll, and we also monitor and sort out and smooth out the difficulties faced by them. This is so far as welfare schemes are concerned. But one of the main reasons for formation of the National Trust is the concern expressed by parents and caretakers. What happens to the children, to the dependents after their lifetime? So that calls for provision of guardianship, that is legal guardianship, not only for their person but also for the property, wherever they have such properties bequeathed to them, inherited by them, etc. Here we are dealing with
a segment of people with these challenges who have who are at a greater disadvantage as compared to other forms of disabilities. So what we have done is, through the state and district authorities and with the help of registered NGOs, we form local level committees which is chaired by the district magistrates or collectors. A person, either by himself, in most cases of these type of disabilities it doesn't happen, so somebody else on their behalf, a relative or a friend or some well-wisher or even an organization, can apply to the authorities concerned saying that such and such a person with this kind of difficulty needs a legal guardian to take care of his interest. So there is a process. We have laid down the process. Within a certain time frame, we also follow up in most cases with the state authorities. And once the applicant is eligible to function as a guardian, his bona fides and his records, everything is ascertained by the committee, and then he is properly made the legal guardian of the person. Then certain obligations, duties and responsibilities are also cast on these legal guardians so that they fulfill their obligations in a proper way. So that is also monitored periodically by the authorities concerned. If there are issues, they can come to the National Trust and then we take over and then follow up to ensure that an appropriate guardianship care is given to the individuals concerned. So those kind of activities we carry out. In addition, whenever issues or some assistance is required, issues to be resolved, assistance is required by people suffering from these kind of challenges, we follow up with the appropriate authorities and then we interact with the persons concerned, with the people who have espoused their causes. We get into a continuous kind of interaction with them, and then we try to resolve the issues. Because the law itself recognizes that for guardianship of persons with these kind of problems, the LLC mechanism will be resorted to. And it's a full-scale guardianship, not limited or partial. So that is another advantage. Thank you. So गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स दिए हैं. क्वेश्चंस एंड में करेंगे प्लीज़ सर, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन विल बी आंसर्ड इन द एंड, ताकि अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, वी विल हैव इट, विल ऑल Q&A विल बी डेफिनेटली इन द एंड. आप नोट करके प्लीज़ रख लीजिए. आप एक प्लीज़ पेपर सर्कुलेट कर दीजिए फॉर द क्वेश्चंस. हाँ, ओके, वी कैन डू दैट. एंड गवर्नमेंट की काफ़ी है स्कीम्स, एंड ऊपर से साथ में AFA एक्शन फॉर ऑटिज्म ने भी एक जगह बनाया है, एक रेजिडेंशियल एरिया बनाया है, आनंदा कॉलोनी, जहाँ पे जो बच्चे खुद रह पा रहे हैं इंडिपेंडेंटली, उनको आगे रहने के लिए. तो बेसिकली, और सर्टिफिकेशन के बारे में वी वुड लाइक टू नो सर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, एंड are there any provisions for autism children in remission? उसका आंसर मैं दे देती हूँ, बिकॉज आई एम हेडिंग दैट सब कमिटी, एंड अभी एज ऑफ नाउ वो रेमिशन का लिए नहीं है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन. वो इशू रेस किया हुआ है, पर अभी यही बोला गया है कि पहले जो बेसिकली ऑटिज्म वाले हैं उनको अभी दे दिया जाएगा, जो रेमिशन वाले हैं उनके लिए हमने बोला है कि उनके पेरेंट्स को भी सपोर्ट चाहिए, पर दैट विल मे लेटर ऑन. अभी राइट नाउ जो, क्योंकि सारी बीमारियों के जो उनको एक्चुअल फुल ब्लोन प्रॉब्लम्स हैं उनको अभी दिया जा रहा है, वो सेकंड अगले चरण में उसको रेमिशन वाला करा जाएगा. सर, रिगार्डिंग द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन, I would like to add just one point. Benefits of getting a disability certificate. Now, for availing benefits under various schemes, skill development, scholarships, and the like, which are implemented by my department, the Vyangjan department, we have now made it mandatory for the persons to get a disability certificate. At least they should enroll and produce proof of enrollment for the UDID card as well, because that confers convenience and benefits. For Niramaya scheme, for example, now there is this benchmark disability of 40%.
The person's disability should meet the minimum of these benchmark in order to make them eligible to get these benefits. Also, these certificates, there are certain facilities provided by various other departments, yes, especially for children with autism, and we are speaking now in that specific context, so I'll restrict myself to that. For example, the CBSC or various state boards and universities, they provide various kinds of facilities and concessions to children, students who suffer from this condition, who face this challenge. In order to be eligible to receive those concessions, a certificate from an appropriate medical authority is a must, because that is the basis on which they are going to extend this facility. So based on the certificate, the provision to get a UDID card also, which kind of, it facilitates it in a much better way, because that card is the only proof that is going to be required for getting a number of, a plethora of facilities income from tax rebate bhi, sir, various income departments. So income we tax are rebate. working towards that. Yeah, like income tax rebate, travel concessions, or also some of them. Because then it will be a universal card, whereas a certificate a person will be required to produce at different points of interactions, whereas a UDID card will make it more convenient and easier to operate. उसको ऑनलाइन करना पड़ता है, और हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जो कि हम अपने पेशेंट्स को तो दे रहे हैं, वी कैन अपलोड इट, उसका QR कोड विल अपलोड इट ऑन द वेबसाइट, कि उसको कैसे आप पोर्टल नेगोशिएट करना है फॉर अ पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट. एंड आपको डिपेंडिंग आपका जो एरिया ऑफ रेजिडेंस है, तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं कौन कौन से हॉस्पिटल में आप जा सकते हैं. Abhi, when I'm going to parents and self-advocates, besides going further, I will also call on stage 4 of parents. Ek to Abhishek Dutt, Mr. Abhishek Dutt, who has helped us make a Telegram group. Mr. Abhishek Dutt, yeah, who's helped us made a Telegram group of parents. You can please join us. Mr. Moindeen Akbar, Shanti Ganesh, Shweta Prasad. Yeah, you can join me on this side. There's not much space, so we can just go ahead. And so what is the support of Dr. Shubhangi is also on the board of directors for Action for Autism. So present status of self-help groups kya hai autism ka, and how does it help, Shubhangi? Thank you so much, Professor Shefali, and thank you to All India Institute of Medical Sciences for inviting me here. तो एक पेरेंट के तौर पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या सपोर्ट ग्रुप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं पेरेंट्स की, क्योंकि पहली बार जब आपको पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है, आप काफ़ी हैरान, आप काफ़ी अपसेट होते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, क्या मेरे जैसे और पेरेंट्स हैं कि नहीं. और जब आप एक सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, तब सबसे बड़ी चीज़ जो आपको होती है वो ये है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे परिवार हैं, मेरे बच्चे जैसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं, और यदि हम सब एक साथ में एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे, तो हम सबके बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, और हम भी एज अ फैमिली अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट और सिक्योर समझ सकते हैं. तो आई हैव बीन अ बेनिफिशियरी ऑफ सपोर्ट ग्रुप ऑफ belonging to an NGO for several years. So my son goes to Action for Autism, and as a family support group, we learn a lot from each other's experiences. हम एक दूसरे के अनुभव बांटते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़, जैसे कि मैंने बोला, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है. तो पूरे कंट्री में इस तरह के सपोर्ट ग्रुप्स मैं देखती हूँ बढ़ते जा रहे हैं. और एक सबसे बड़ी एक आजकल एडवांटेज ये है कि बिकॉज ऑफ द इंटरनेट, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे पेरेंट्स जुड़ सकते हैं, जो हो सकता है एक ही जोग्राफिकल लोकेशन में नहीं हो, लेकिन वो ग्रुप्स बना सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, फोरम्स बना सकते हैं. सो वी आर लिविंग इन अ टाइम वेयर वी कैन रीच आउट टू ईच अदर in a way much more deeply than probably it was possible 20 years ago or whatever. Yeah.
थैंक यू, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली आई फील कि जब पेरेंट्स आपस में बात कर सकते हैं तो उसमें पता चलता है वी आर नॉट अलोन। एंड जो एक पेरेंट का वी हैव दिस ASD स्मार्टियंस का जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें पेरेंट्स आपस में एक दूसरे को गुड एडवाइजेस देते हैं कि क्या है, वो स्ट्रीमिंग कर रहा है तो क्या करना है, सो दे आर गिविंग ईच अदर। वी आर देयर, वी आर जस्ट साइलेंट spectator to it, but मतलब but they are doing it। and also I feel कि हमारे पास उतने रिस्पाइट होम्स नहीं हैं जो भी कह लिया जाए। तो आई एम इनकरेजिंग, लाइक हम लोग पहले ग्रुप काउंसलिंग शुरू करी है हमारे आउट OPD के बाहर वाले एरिया में, ताकि अबाउट 20-30 पीपल इकट्ठे काउंसलिंग कर रहे थे। तो ने बोला है कि बडीज़ बनाने के लिए कोई एक जगह के एरिया में रहते हैं, तो अगर 2 फैमिलीज इकट्ठे हो जाएं, तो अगर क्या होता है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, तो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ बिजी है तो वो दूसरे, आपके पास अपने बच्चे को छोड़ने की कोई जगह नहीं है, तो दूसरी फैमिली टेक केयर कर सकती है। तो यू कैन हैव दिस बडी सिस्टम, वेटिंग फॉर द रिस्पाइट होम्स। गवर्नमेंट जब भी बनाएगी, कितना होगा, द बडी सिस्टम कैन वर्क, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट। एंड अगेन आई विल आस्क यू कि आप बताएंगे कि ऑप्शंस क्या है टू एम्पावर द पेरेंट्स। दिवांश, आप भी आगे खड़े हो जाओ बेटा। एंड केयर टेकर्स ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, कैसे उनको एजुकेट और ट्रेनिंग करने के लिए। मेरे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि आप इंटरनेट में डालेंगे ऑटिज्म, इधर खड़े हो जा बेटा, ऑटिज्म डालेंगे तो 7 बिलियन हिट्स हैं। अभी पेरेंट क्या पढ़ने वाला है मुझे नहीं मालूम है कि वो एविडेंस बेस्ड है कि नहीं। तो पेरेंट्स को यही रहता है, हर बंदे को होता है, हर एक को अपना दिल से काम लगाते हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स को दिमाग को ज़्यादा लगाना है, दिल को थोड़ा नीचे रखना है, क्योंकि लॉजिकल चीज़ देखनी है। अपने आप ये नहीं है जो भी आपको कहीं किसी ने लिख दिया, और कहीं फेसबुक पेजेस होते हैं उसमें कई लोग कमर्शियली मोटिवेटेड होते हैं जो उसमें होते हैं, तो आपको वो पता नहीं होता, किसी ने लिख दिया बहुत अच्छा है, आप बस उसके ऊपर ही चले जाओगे। कोई फनी से न्यू बड़े एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स दे दोगे, कुछ नई नई थेरेपीज बोल देते हैं, सो ऐसे नहीं है। रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट वी हैव टू सी। तो मैडम आपका क्या रहेगा? नहीं, एक्चुअली जब एक बच्चे का डायग्नोसिस होता है तो पेरेंट्स को बतलाया जाता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, लेकिन पेरेंट्स को ये नहीं बतलाया जाता है कि आपको क्या करना है, आपको जानना क्या ज़रूरी है, आपके लिए क्या आवश्यक है सीखना, कि आप अपने बच्चे को लेके आगे बढ़ सकते हैं। और इस विषय में ये भी कहना चाहूँगी कि कभी कभी पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, खास तौर पे मदर के ऊपर। ये माना जाता है कि अगर मेरा एक माँ का बच्चा ऑटिस्टिक है तो माँ को ही अपना पूरा जीवन न्यौछावर करना है, उसको मतलब एक लेवल पे लाना। और अगर बच्चा अच्छे से डेवलप कर रहा है तो ये माँ का क्रेडिट है, और अगर बच्चे में डिफिकल्टीज है तो नहीं, ये आई माँ का ऑब्जेक्ट, शेर है। क्रेडिट नहीं है, अच्छा कर रहा है तो नो, आई एम सेइंग दिस अच्छा इज तो द माँ का क्रेडिट नहीं होता है, वो that फादर का is क्रेडिट right. होता है। That is the credit of the family, of the father, of the नहीं, doctor, of the clinician. yeah, but it's not mother's Yeah, credit. Okay, but if there is a problem, then the blame lies with the mother. yeah. Always. So because of this situation, it is very, very important for there to be solid family support programs and family training and empowerment I have two programs. mothers and two fathers, so I'm balanced. So I will not be hit from behind. So for parents to be sensitized about what the child's condition is, for parents to not have unrealistic expectations also, because there are many quacks available. There are many fake cures which extort lakhs of rupees from parents in the guise of cure. So I think right at the beginning, along with the child's diagnosis, there needs to be a thorough parental counseling by all the important hospitals or clinical centers, which need to really give parents a checklist of what to look at, what to expect, what are the developmental milestones, and so on. So parental training is very, very important. But also in a country like India, where many parents come from very poor socio-economic strata, अगर एक लेडी एक मजदूर है, अगर वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रही है, तो हम एक्सपेक्ट थोड़ी ना कर सकते हैं कि वो एक ट्रेनिंग करेगी, पेरेंट ट्रेनिंग। तो ऐसे सिचुएशंस में डाइवर्स ग्रुप, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स को किस तरह से एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। सो वी हैव टू एक्चुअली थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस, लेकिन पेरेंट्स को एम्पावर करना ये बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, दैट इज वाई हमारी वो वेबसाइट पे है, पेरेंट्स का मटेरियल है काफ़ी, अभी हमें रिवाइज करना है। लास्ट जो एक मोटा बुक है जिसमें सारा एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस है, वी आर गोइंग टू बी रिवाइजिंग शॉर्टली। वी कुड नॉट कंप्लीट इट नाउ, तो वी विल बी डूइंग इट इन नेक्स्ट 1 मंथ और सो, तो फिर वो भी अपलोड हो जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी फील कि हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स को बताना कि किस चीज़ का एविडेंस है, किस चीज़ का नहीं है। एंड बेसिकली डॉक्टर विश्वरूप की आपका क्या ओपिनियन है कि हाउ टू अराइव एट द मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड, एंड क्या? Thank you, ma'am.
when we talk about maximum potential, I think the most important thing in autism that we should focus on is the neurodiversification part. कि we should start moving away from definition of normal. जो हम usual society में बोलते हैं ये normal है, ये abnormal है, हमें इस definition से हटना पड़ेगा. और जो हर बच्चे में खासियत है, चाहे कोई बहुत अच्छा गाना गाता हो, चाहे कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता हो, somebody may be very good in developing a software, somebody may be very good with developing a computer game. So ये सारी जो खूबियाँ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको हमें उन्हें हॉर्न करनी चाहिए ताकि वो आगे जाके लाइफ में उस पर्टिकुलर फील्ड में शाइन करें. हम उस थॉट प्रोसेस से हमें बाहर निकलना पड़ेगा जो टिपिकल प्रोफेशंस है जिनको हम सोचते हैं कि यार द सो कॉल्ड सक्सेसफुल प्रोफेशंस, हमें उस डेफिनेशन से हट के जिस चीज़ में बच्चा अच्छा है उस चीज़ में उसको एनकरेज करना चाहिए और उसी राह में उसके प्रोफेशन को भी हमें ढूंढना चाहिए. आई थिंक दैट वुड बी अ बिग स्टेप एंड दैट इज़ वेयर न्यूरो डाइवर्सिफिकेशन वुड प्ले अ बिग रोल इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म. थैंक यू. डॉक्टर संजीदा, आप एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या बात ऐड करना चाहेंगे इसमें? गुड आफ्टरनून. पेरेंट्स को हमें इनकरेज करना चाहिए कि पेरेंट्स सबसे पहले तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें जो भी ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, और जो बच्चों के जो स्पेसिफिक टैलेंट हैं उन पे फोकस करें. और अगर स्पेसिफिक टैलेंट नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट वो ये माइंडसेट रखें कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं. एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें, तभी वो बच्चे के ट्रीटमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे और तभी उनके पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर पाएंगे. एंड उसमें प्रोफेशनल्स भी उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि उनको ये रियलाइज़ कराएं कि बच्चे के जो स्पेसिफिक जो टैलेंट है, जो वो कर सकता है, जो कैपेबिलिटीज़ उसमें है, उन पे फोकस करें, ना कि उसमें जो वो नहीं कर सकता है. स्किल बिल्डिंग के लिए उनको इंटरवीन करें, उनको बताएं कि कैसे बच्चों में स्किल्स डेवलप करें. तो इस तरीके से प्रोफेशनल और पेरेंट्स मिलकर साथ में बच्चों के पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर सकते हैं. और साथ में इसका टीचर्स का भी रोल इसमें अहम है. टीचर्स, क्योंकि इस बच्चे का ज़्यादातर टाइम जो है वो स्कूल में भी व्यतीत होता है, तो उसके लिए स्कूल क्लासरूम के लिए भी कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कुछ बताने चाहिए. उनका भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, जैसे कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विजुअल लर्निंग होनी चाहिए, और पिक्चर कार्ड हम क्लास में यूज़ कर सकते हैं. साथ में जो उनके पीयर ग्रुप है उनको भी सेंसिटाइज़ कर सकते हैं, उनको भी इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका जो साथी है, जो आपके साथ है, उसकी ज़रूरतों को समझें, उसकी प्रॉब्लम को वो समझें और उसके साथ एम्पैथी रखें. तो बच्चों को भी उसके लिए सेंसिटाइज़ करना चाहिए. तो सभी को साथ में मिलकर इस तरीके से बच्चे के पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर सकते हैं. कैपेबिलिटी जो है उसको देखना है. और इसमें अगर हम जो बुकलेट अभी निकाली है उसमें हमने एक शेड्यूल बनाया है कि उसमें पूरे सुबह से शाम तक क्या करना है बच्चे को, उसका विजुअल फोटो से दिखना चाहेगा, तो बच्चे को एंग्जाइटी नहीं रहेगी कि क्या होगा. और एट द एंड ऑफ द डे एक रिमार्क्स कॉलम है, अगर बच्चा अच्छा रहा है तो स्माइली दे रहे हैं, अगर गुस्सा कर रहे हैं और वो इरिटेबल रहा है, कुछ अच्छा नहीं रहा है, तो सैड फेस दे रहे हैं. और संडे को गिनेंगे कि कितने स्माइली हैं और कितने सैड फेस है. स्माइली ज़्यादा है तो आप उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे. और लास्ट पेज में एक एक वो तभी हमने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सा बनाया है, जिसमें अगर जो पेरेंट्स का साथ में जो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट है और साथ में जो आपके थेरेपिस्ट हैं, उन सबके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स है इकट्ठे एक ही पेज में. ये नहीं कि आप अलग अलग चीज़ें कराए जा रहे हैं, तो वो नहीं होना. और कहीं आप लोग थेरेपिस्ट के लिए जाते हैं तो होम बेस्ड उसको करना होता है, तो हमें जो सारी चीज़ें अपनी डेली शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करनी है. तो इसलिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है. और हर बच्चे का पोटेंशियल अलग है, उसकी अपनी जो दिमाग की क्षमता है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो छोटे बच्चे में डीक्यू है और बड़े बच्चे में आईक्यू है, उसके हिसाब से हमें रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं. तो जो पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स हैं उसको कैसे उसको हेल्प करें, तो इसी के लिए हमें आगे बढ़ना है. और डॉक्टर प्रशांत, अभी क्या लेवल ऑफ अवेयरनेस है अमंग द पब्लिक अबाउट ऑटिज्म, एंड व्हाट आर द वेरियस हर्डल्स फेस्ड इन द बाय ऑटिस्टिक चिल्ड्रन इन सोसाइटी? तो हम सब इस बात से साझा करेंगे कि ये जो डिज़ीज़ है ये एक सिंगल बच्चे या किसी व्यक्ति की नहीं है, पूरा परिवार की एक ये हेल्थ प्रॉब्लम.
तो जाहिर सी बात है कि अगर परिवार के लिए हेल्थ प्रॉब्लम है तो परिवार के सारे लोग किसी न किसी वजह से इससे ग्रसित होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स हैं उनके फैमिली लाइफ में। बाकी जो बच्चे हैं जो कि ऑटिज़म से ग्रसित नहीं हैं, प्रभावित नहीं हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं, उनका डेवलपमेंट भी हैम्पर हो जाता है। कई बार पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों में फोकस करने लग जाते हैं। कई बार पेरेंट्स की फाइनेंशियल इश्यूज आ जाती हैं, मैरिटल डिस्कॉर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये विद इन हाउस प्रॉब्लम्स हैं जो इन्हें झेलना पड़ता है। और कई बार घर के बाहर जो सोसाइटी का एक्सेप्टेंस है, जो ये इश्यूज हैं जिसमें डे टू डे इश्यूज हैं, बच्चे के स्कूल से लेके बच्चे के डेवलपमेंट, एजुकेशन, और जहाँ वो रह रहे हैं अगल बगल के नेबर्स में एक्सेप्टेंस। तो ये मल्टीपल इश्यूज हैं जो कि फैमिलीज़ को फेस करना होता है विद इन द हाउस एज वेल एज इन द सोसाइटी। सो वो ये सारे इश्यूज हैं। इसके साथ जो अवेयरनेस है लोगों की, वो अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा नहीं है। थैंकफुली पिछले कुछ समय से जो हम ऑटिज़म की बातें करना ज़्यादा शुरू कर चुके हैं, ऐसे अवेयरनेस मंथ हम कर रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में हम इसकी बातें कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली ये चीज़ें थोड़ी बहुत फैल रही हैं, पर बड़े बड़े सिटीज़ तक ही अभी तक रुकी। बाकी जगहों पे लोगों को इसके नॉलेज नहीं है, तो एक्सेप्टेंस भी नहीं। वो एक अलग ही तरीके से ऑटिज्म से पीड़ित परिवारों को देखते हैं, उनको थोड़ा उनसे दूर रहना या अपने बच्चों को उनसे दूर रहने का एडवाइस देते हैं। सो दिस इज़ देयर। सो ये चीज़ें अगर हम सब कुछ समझ लें, तो अगर हमारे पास कोई बच्चा है जो हमारे परिवार में ऐसी शिकायत से गुजर रहा है या नहीं भी है, तो हम इस बीमारी के बारे में जानें या इस शिकायत के बारे में जानें, ताकि हम एज अ कम्युनिटी इससे डील करें। तो वो अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है ये हम सभी का काम है, डॉक्टर्स, सपोर्ट ग्रुप्स, पेरेंट्स। तो ये हम सभी का काम है कि हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर गौतम की या क्षमा करें, मैं थोड़ा मेरे पैनल कलीग से थोड़ा सा मेरा जो रवैया है थोड़ा अलग है। मैं डॉक्टर कुमार हूँ, मैं अस्पताल प्रशासन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर हूँ, और मेरा बेटा ऑटिस्टिक है, 5 साल का है। पहली बात तो मैं प्रोफेसर शेफाली गुलाटी मैम को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इतना मेहनत उन्होंने किया। आई थिंक हम शायद पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैम ने कितने साल की मेहनत का ये नतीजा है, क्योंकि हम लोग शायद यूएस से 20 साल पे। आई थिंक शी शुड गेट अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वर्क दैट शी इज डन, फिनोमिनल वर्क मैम। एंड एक्चुअली मुझे लगता है ये मेरा रवैया ये है कि मुझे हमें इसे डिजीज़ पर्सपेक्टिव से डिसेबिलिटी की तरफ हमें एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है। आई डोंट नो, दैट्स माय व्यू मैम। मेरा छोटा सा जर्नी बताना चाहूँगा कि 3 साल की उम्र में आई वाज डायग्नोज्ड हियर, एंड मैम ने हमें रास्ता दिखाया, और हमने उनके कहने के मुताबिक थेरेपी दी, और अभी भगवान की दया से मेरा बेटा काफ़ी हद तक let us say he's adjusted to his surroundings. And I think one of the important factors is for the parents to accept the fact that the child is autistic. Whether he's going to be in the spectrum, whether he's going to be in remission, it's irrelevant. मेरे ही फ्रेंड डॉक्टर विश्वरूप ने भी कहा था जब मैं लेके आया था कि it doesn't matter what it is, it doesn't matter, labeling is irrelevant. मैम मैं 5 मिनट ले सकता हूँ अगर आप कहते हो? थैंक यू मैम। सो मैं इसे दो परिप्रेक्ष्य में बताना चाहूँगा। एक, एज अ फैकल्टी इन अस्पताल प्रशासन का क्या कहें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मा ये है कि हम जो ये नींव बो रही हैं कि ऑटिज़म में हम किस तरह आगे बढ़ें, उसको फुलफ़िल करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मुझे पक्का पता है, बहुतों को लगता होगा कि भाई क्रिटिसिज्म क्लिनिक में आ गए, 10 मिनट मिलता है, टाइम नहीं मिलता, लेकिन हमें एम्स के परिप्रेक्ष्य से भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 100 पेशेंट्स आते हैं, नॉर्मल ओपीडी होती है, वहाँ से निकल के ऑटिज्म क्लिनिक में आते हैं। हमें पता है कि हमें और बहुत कुछ करना है, और डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड साइकियाट्री एंड डॉक्टर शेफाली गुलाटी हैव बीन वर्किंग टायरलेसली फॉर many years to make it better, to bring in occupational therapy, to give the time, to have many other modalities for treatment. We are aware of the fact that बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो शायद नहीं मिल पाता, या
हमारे अस्पताल में हम इस तरह से अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं. Clearly, because I can afford, I'm spending about 10-20,000 a month for my child. I'm sure poor people cannot afford it. But we all have to work as a team, as stakeholders, as parents, as artists. शायद अगले पैनल डिस्कशन में, या अगर मैम रखें, अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना चाहें तो उस पैनल डिस्कशन में ऑटिस्ट भी हों, ताकि उनका वो जो कहना चाहें हम सब सुन सकें. We could have assisted devices for that. So मुझे ये लगता है कि हमें एक डिजीज बेस्ड पर्सपेक्टिव से हट के न्यूरो डाइवर्स कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए. मेरा बेटा अच्छा गाता है, ठीक ठाक पढ़ भी लेता है. So I have to look at his strengths and give him that environment that's going to be feasible. Therefore, the school is very, very important. He's in a school where the special educator team is very, very nice. So I have personally made sure that every 3 months we have an interaction, ma'am, between the school teacher, the special educator, me, my wife, and the therapist. तो हमें लगता है कि हमें इसे उस परिपेक्ष में देखना चाहिए कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं. ऑटिस्ट हिमसेल्फ, द पेरेंट्स, द स्कूल, द स्पेशल एजुकेटर्स. इनफैक्ट अभी भी दिल्ली में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं. जैसे आई स्टे इन नोएडा, देयर इज अ ग्रुप कॉल्ड ऑटिस्टिक पेरेंट्स इन नोएडा. तो वहाँ पे और एक और ग्रुप है जिसमें कि जैसे मैम को पता है उसके बारे में, कि हम पेरेंट्स ऑटिस्ट से सवाल पूछते हैं. उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे जो भी सवाल हैं, मेरे पास 5-6 सवाल हैं, और इतना बढ़िया हमें उसे एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि ऑटिस्ट इस दुनिया को किस 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 पर्सपेक्टिव से देखता है. तो कहने को और बात करने को बहुत कुछ है, पर मैं अपने आप को इतने में ही सिमट कर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को. थैंक यू डॉक्टर कुमार. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हर पर्सपेक्टिव पे देखना है, एंड इट इज़ वेरी नाइस कि आपने शेयर किया है ऑल दिस जर्नी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तभी ये बोला जा रहा है कि वो जो लास्ट पेज में बनाया ना, कि जो सारे गोल्स हैं, गोल्स सबके इकट्ठे होने चाहिए. ये नहीं कि एक थेरेपिस्ट का अलग गोल है, एक अलग है. एंड आई ऑलवेज आस्क पेरेंट्स की एक डायरी बनानी है, दैट डायरी में ये, और यू कैन मेक अ फाइल जिसमें ये प्रिंट आउट निकाल के यू कैन मेक द फॉलो अप, और डायरी में ये चीज़ें करें ताकि वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर मैचिंग. ये नहीं है कि एक ने एक बनाया बच्चा एक ही है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड और इसको इनकॉर्पोरेट डेली शेड्यूल में करना है. हमारे यहाँ पे वी आर नॉट अ थेरेपी सेंटर, सो वी आर नॉट गिविंग थेरेपीज हेयर. वी आर गाइडिंग होम बेस्ड इंटरवेंशंस, and but we have been looking for more space, and subsequently probably in the next couple of months we'll get more space where we will be at least we will be able to actually demonstrate the various activities, and just बोल के ही नहीं बता दें और फोटो ही दिखा के ना करें. We will be able to demonstrate, like रोज के sessions नहीं होंगे, but we can have one session ताकि they can understand group and otherwise. तो उसका है. गौतम, how can the level of awareness be improved among public, और कैसे वो सोसाइटी इंक्लूसिव कर सकते हैं इन ट्रीटिंग चिल्ड्रन विद पीपल विद ऑटिज्म? थैंक यू मैम. सो इस चीज़ के लिए हम जो है और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आज का प्रोग्राम है वैसे हम और प्रोग्राम्स कंडक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स भी आगे आके ये चीज़ों में साथ दे सकते हैं ताकि और अवेयरनेस फैले. अवेयरनेस सिर्फ ऑटिज़म के फैमिलीज़ में नहीं, बाकी नॉर्मल पब्लिक में भी होनी चाहिए, ताकि द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ऑटिज़म उनको बाकी सोसाइटी अपने में इंक्लूड करने का सोचे, जो कि अभी हमारे देश में थोड़ा एक्सेप्टेंस कम है. इसके अलावा हम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और ज़्यादा हमें इस बात ऑटिज़म के बारे में ज़्यादा चीज़ें फैलानी चाहिए जो कि एक्चुअली एविडेंस बेस्ड है, रादर दैन जो बहुत अफवाहें फैलाई जाती हैं उनको हमें तोड़ना चाहिए इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया. तो इन तरीक़ों से हम और ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं. और दूसरी चीज़, हम कई सेलिब्रिटीज़ से हम उनको इन चीज़ों के बारे में, ऑटिज़म के बारे में अवेयर करके उनको एम्बेसडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसके अवेयरनेस के लिए, फैलाने के लिए. थैंक यू गौतम. अभी डॉक्टर मिस्टर अभिषेक, कैन यू जस्ट टेल अबाउट योर जर्नी? एंड वी डिसाइडेड दैट मैसेज देंगे, 3 मैसेज पेरेंट्स के लिए देंगे, ये हमारे चारों पेरेंट्स 3 मैसेज पेरेंट्स के लिए देंगे और एक मैसेज ले पब्लिक के लिए, so that we are on the point, right? Mr. Abhishek, yeah. So, here's my kid, Rudransh. Can we have the slide show?
Yep. So as rightly said by the panelists, yes, being a parent of a special child, we are also a special parent, right? Because day and night we are doing something which is not being done by the rest of the parents. Sorry, yeah. Sorry. So here is my kid, Rudransh. So he was diagnosed with the autism at the age of 4, right? And slowly we started working on that, and we seek the guidance from the various places, right? We started his various therapies because we were in the position to do that, right? So yes, we did that, and results are now on the track. Right now he is doing so many things which he was not able to do. Today he is 9 years old, and he is absolutely independent child. We don't need to worry about him at the home. He is doing everything on his own. Slowly he is learning to reading and writing, right? Although we are facing some kind of problems with that, but with the help of occupational therapists, with the you know fantastic guidance which I am receiving from this place, AIIMS, right? And with Shivali ma'am and the whole team, we are doing so many things, and it's working out. Only thing is that we need to put on so many efforts and resources, but it is eventually working. So my message to the parents is that yes, these kids are special, they have the skill. Only point is that we need to find out the right zone of their comfort, and we have to excel that. We have to stop thinking what rest of the people are saying about, or as Shefali ma'am always says, that we have to break the social stigma, right? So whatever people are saying and thinking, we need to grow from that, and we need to start working on the right strength or the fortes of our child, and it happens. Yep. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you. Thank you. May I request Mr. Moinuddin Akbar to talk about Khalid? Good afternoon, everybody. Good afternoon, doctors. And I mean, as a parent, I thought like I'll just share how you can get started going in such kids. Okay, I just have only two messages. One is, how do you work around the individual strengths? I mean, this is something which Vishwarup sir also pointed out, Dr. Kumar also pointed out, and we had this very widely discussed. So I thought like I'll just express the journey of my son as a case study. Well, his strength was in cooking, and he was in baking. That is something which we noticed when he was a very small child, like, the Hawkins cooker, which has got a very difficult way of closing it. As a 3-year-old kid, he could figure out. He used to exactly do it. And like that, a lot of small things which we noticed. And he was completely observing his mother in the kitchen. And these kids are visual learners. And whichever thing which they are able to see the most, they learn from that. He started observing recipes. He used to climb on the platform. He used to see how the cooking is done. Then slowly he started doing it. Then we thought like it's good, because this is how it's one way of becoming independent. Learning to cook, it's a fundamental skill. Every one of us should know, because we can survive at least. We don't have to be dependent upon anyone. So then we started this. Then with the same context, I thought like let him get learning his vocabulary as well. So we started giving him small recipes, like baking cooking box in which you will find a recipe. He started reading it. So anything which a kid has got an interest, they will try to learn that. They are like sponges. They would like to learn those things which are most important for them at the moment, not what is in the future. So at the moment when he feel like I need to find out what this recipe is about, he quickly grasps it. Then I taught him how do you look into dictionary for difficult words. So he learned that very fast, and whenever there is a difficult word in the recipe, he used to look into the dictionary.
So his vocabulary started improving. So like that, you can slowly, slowly start improving. So this is just an example. Similarly, if your kid is good in, say, art, okay, now see if you can get some books on art. How do you develop various skills? What are the materials? Okay, so that is how they will start learning the vocabulary related to this particular thing. So this is one way of my thing. Just as a brief introduction of my son. My son, he just recently completed his diploma in bakery. And of course, all the journey, like 10th standard, 12th standard, everything he's got done through NAOS, open schooling. So there are the various way to this thing. So my advice to all the parents is, don't be completely worried about how he's going to get his 10th standard. How is he going to get his 12th standard? So there are a lot of ways to do this thing. That should be the least of your worries at this moment. Your thing is, how do you make him independent? How does he get life skills, right? And revolving around that, let him start learning various elements. So that is number one. The second message is, there was a lot of discussion as to how not to segregate these kids as a special kids, that this is an abnormal kid, this is a normal kid or something like that. Mind you, all of us got some sort of a deficiencies, and we all work towards just happiness. However bright you are. All right. Now, happiness, the slide is not very clear. I mean, this is a forum of neuro, this thing. So I thought like I'll just include some this thing. Happiness, all said and done, comes through only just 4 hormones. The dopamine, the oxytocin, the serotonin, and endorphin. Whether you are normal or abnormal, we all just see to that like we have sufficient doses of this one. And those kids, they try to get these hormones in a different way. We get it in the way with majority of all this thing. So getting a dopamine for a special kid might be slightly different. He might do certain repetitive activities. So you just have to see that like slightly fine tune it in a more constructive way. Say endorphin. We all go to the gym and we run a cycle or a walk, whatever it is, and nobody calls that you are abnormal. We are not going anywhere. We are running in the same place. But similarly, a special kid, they might be doing something. They might be running around in the house. For that, they are getting endorphin. And that is their way of satisfying it. And we are satisfying it in a different way. So likewise, same is the case with oxytocin. Now, oxytocin is something which we all have to give each other. Whenever such kids do something, dopamine, give them a reward, praise them. How much ever the smallest of this thing, encourage it. And give them a hug. We all need hug. Even adults need hug. Okay, there's a famous lady in the Kerala, Amritananda Mai. The only thing she does to all her visitors is give her a hug. And thousands of foreigners come there. Why? Because it's a sort of a feeling which they're getting. So this is what everybody needs it. So there's no harm providing us. We all provide each other. So these are the 2 messages. I thought I'll just share it with you. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much for coming and sharing. Thank you so much. Shanti Ganesh, for Nilesh's mom. Yeah, please. Thank you for giving me the opportunity, ma'am, and the entire panel. So I'm so happy today that I've come to share the view of my child. My child is Nilesh Ganesh. So I've gone through a big journey. He's 30-year-old now. So he's an adult. So at that time, there wasn't any therapy or any help or even awareness about autism. There was not awareness about autism at all. And people used to label as mad. So I have come across various times, your child is mad. So at that time, we really feel like what society doesn't know about it. We have to educate them. We have to create awareness. That gave me the passion to, go into it and somehow make him an adult individual that he can do everything on his own. That was my challenge. So I was a teacher. Initially, I was in bank. I gave up bank job. I said I'll go into teaching. Teaching wherein the kids, I gave up, first I was teaching class 12th, commerce. I gave up that and then I went into voluntary teaching
teaching these special kids in Sriram. As a volunteer teacher, I was just helping these kids how to come out of the problems. So my takeaway from this is like 3 mantras which normally we have to share, like acceptance, accept them first, accept, motivate, and then appreciate them. 3 mantras. Acceptance is very important. First, the family has to accept the kid. So that is a prime thing. If the family does not accept, all the problems start only from there. Then you can't do anything. Then starts with depression and your health problems, and you cannot take the child up. So only thing is first accept, not a problem at all. And these days you have so many therapies and people working for this. Shefali ma'am is doing a great job. I know her as a person, how much of things she's brought in so many therapies and so many activities for these kids that they have benefited now these days. So families have to come and accept the things and move ahead. And how do you move ahead? Identify their goals. Small goals. Initially, small goals you set for them. And as small part is achieved, even buttoning the shirt, the small activity. They're able to button the shirt, then you motivate them. Yes, you can do it, you can do it. When they do it, appreciate, applaud, and feel as though they've done a great job. They're doing a very small, tiny job. But that will create a big impact in their mind. And they, they have that, they get a confidence that even I can live a much better life. So as I did this, I explored Nilesh to be, a colorful person. Like from outside, from inside, what do they have inside? That has to be brought out. So that came out in the form of colors. And so he started, drawing, painting, and a lot of activities where he could express himself. These kids have various emotions, with different ways of expressing. So one emotion is colorful emotions. And this art has been chosen by the jury of National Modern Art Gallery, and this is being displayed. This is going to be displayed on 27th, day after at NGMA. This particular painting is being chosen by the jury of National Modern Art Gallery. And this is the journey of Nilesh. And so everybody, I'm assuring that everyone can go ahead and, make some changes in their life. First of all, acceptance. Accept, motivate, appreciate. If you do that, then life changes. And you feel that when the child is happy, like if you compare this child with a normal child, the normal child gives a lot of happiness, but that doesn't, go into a heart. When this child gives us happiness, it's heavenly, it's divine, The small happiness the child gives in a life, it creates a lot of, like things running in our senses. We are so delighted, we're so happy. In fact, we are, I should say, God has given us such a gift. Accept them. God has given us such a gift that we can do it. We are here to do it and we will do it. So I will wind up this by saying that a small song for these kids from all the parents' side. Oh children, well, we love you like an evergreen tree. Stay evergreen and young as the seasons go. On every branch will grow soon dreams for me and you. At Real Global stay evergreen, for our hearts stay out too. Oh, our children, well, we love you like an evergreen tree. Stay evergreen and young as the seasons go. So likewise, the public also should accept. We'll have to make, that is the awareness we are creating, the platform we are creating. Public also have to accept us. Awareness and acceptance. Acceptance. Awareness and acceptance is the message. Thank you Yes, so thank much. you. Thank you so Thank much for your wonderful journey. I will now request Madam Shweta Prasad to give about उनका मैसेज क्या है दिवांश के साथ जर्नी में, जो कितना अच्छा गाता है इतने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स में. Thank you, Shefali ma'am, for giving the opportunity. I am mother of Devans. Devans is right now 17 years old and he is a professional singer. He is not formally trained till the age of 15 years. He's a TEDx performer. He performed at TEDx event too. He received 1.5 years.
Mama, मैं कहाँ रखूँ? That's all right, ma'am. That's all right, ma'am. That's okay. That's all right. No, he's in the language building process right now. So I have to give the prompt when whatever he needs to say, I have to say the exact words, and he repeats, and that's how he's learning the language. That is also people have a just not learning. There are a lot of things to unpack in that. Yeah, ma'am. I am also a So the behavior prompting is a- therapist. Yeah, yeah. I am a behavior therapist and a special educator. I have done my special education from Action for Autism, and I learned everything whatever is needed to teach Devans. And I think whatever the points, acceptance and awareness, all the parents and doctors have said, I will say if you look only the one step instead of looking कि हमें कहाँ जाना है, यहाँ approach करना, वहाँ approach if you only look the next step कि अब क्या करना है, the life is much easier. And for the next step, just break down the steps in smaller parts कि इस step को सिखाने के लिए क्या क्या चीज़ों को सिखाने की ज़रूरत है. Like अगर हमें writing सिखानी है, हम सोचते हैं कि हमें writing सिखानी है, तो for that we need to first hold the pen, then moving of the hand. तो उसके पहले के कौन से skills है, like हमें hand movement आना चाहिए, तो sand पे लिखना आना चाहिए. तो if you break down a simple step into more steps and then work on that, I think that will be helpful for the child and helpful for the parents too. Because हमारे बच्चे अगर थोड़ा सा भी progress करते हैं ना, तो वो जो satisfaction होती है, that is I will say unexplainable. Yeah, it's a very proud mom. Facebook में बहुत active है. Yeah. He's very trained. He does all the household work. अगर किसी का भी कुछ सामान है तो उसको पता है वहाँ रखना है, तो वो he will pick up all the things and put the things there जहाँ पे भी रखना है. Social skills are poor. That's okay for me because I'm not much worried. I'm working on that and that's fine. क्योंकि अगर acceptance है तो आप जो चीज़ दुनिया से चाहते हैं वो चीज़ आप खुद करो, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी भी आपको एक्सेप्ट करती है. बी ए रोल मॉडल, सोसाइटी अपने आप एक्सेप्ट कर लेती है. दैट्स इट एंड थैंक यू. Thank you, Shweta. Thank you very much. Can we just have few questions? What are the prospects for a child with autism in relation to higher education and skill development? Our parents from where we can get counseling, as parents from where you can get counseling done. Shubhangi, you want to say? Yes, so the prospects for higher education are very good. We are seeing more and more children on the autism spectrum actually completing college, doing engineering, doing information technology and so on. And the reason for this is कि आजकल जो एक particularly Right to Education Act के बाद जो बच्चों को एक यूनिवर्सल राइट है टू गेट एजुकेटेड इन मेन स्ट्रीम स्कूल, ये एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा सामाजिक चेंज हमारे समाज में आया है कि आजकल स्कूल्स हर किस्म के बच्चे को लेते हैं, चाहे उसकी जो भी डिसेबिलिटी हो. मतलब इफ दे आर सपोज टू टेक दैम, inclusion is supposed to be the what is supposed to be followed. And because of this, a lot more children are going through school. Also, you have open systems. For instance, NIOS is, जो बच्चे mainstream school में नहीं जाते, वो अपना 10th और 12th NIOS से भी कर सकते हैं. फिर open and distance learning एक बहुत बड़ा मौका है disabled लोगों के लिए. For instance, open universities, Indira Gandhi National Open University, open schooling in Delhi University, बहुत सारे इस तरह के जो systems है, they are very, very beneficial for persons with disabilities, including persons with autism. So because of that, they are getting a higher education, and therefore jobs, you're finding employers are getting more ready to welcome persons with different disabilities into the employment space. तो जो स्थिति आज के डेट में है वो बहुत बेहतर है जो 20 साल पहले थी या 25 साल पहले थी. Of course अभी भी बहुत काम बाकी है, लेकिन एक मतलब आशा के किरण डेफिनेटली है. क्या तो एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि स्पेशल एजुकेटर कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं. तो बेसिकली आजकल देयर लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स विच आर टेकिंग प्लेस. वो एनसीईआरटी वगैरह में सेंसिटाइजेशन करना है इन लोगों के लिए. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ दे हैव टू बी टॉट. तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दे हैव टू अंडरस्टैंड, उसको समझना पड़ेगा कि ऑटिज्म क्या है, कैसे हैंडल करना है. तो उनकी ट्रेनिंग होनी पड़ती है उसके ऊपर. यूडीआईडी के लिए पूछा गया आपको, तो यूडीआईडी के लिए वो पोर्टल है गवर्नमेंट का, उसके अंदर जाके आपको
एनरोल करना होता है, जो आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है उसका रेजिडेंस का प्रूफ लगता है, उसके हिसाब से आपको हॉस्पिटल्स के ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर वो कुछ है हम अपनी वेबसाइट में वो डाल देंगे। हमने एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप लॉगिन करते हैं, तो उसमें क्या क्या नेगोशिएट करना होता है पेरेंट्स के लिए, वो हमारे अपने पेरेंट्स के हेल्पलाइन के लिए था। या तो आप हेल्पलाइन में करेंगे तो कर देंगे आपको व्हाट्सएप, नहीं तो अदरवाइज विल पुट इट ऑन द वेबसाइट। एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम सूरज वेद जोगिंदर सिंह जी, सीनियर सिटीजन सोशल एक्टिविस्ट, हाउ टू हैंडल इंटरप्टिव नेचर ऑफ द चाइल्ड, और वो सुनना कुछ नहीं चाहते हैं और वो सेल्फ टॉपिंग कर रहे हैं, स्टिमिंग कर रहे हैं एंड हैंड फ्लैपिंग कर रहे हैं। हाँ, क्या, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स रियली नाइस। तो फिर बेसिकली ना हर इश्यूज़ के अंदर वी हैव टू हैंडल एंड गाइड। पता है वो बच्चे जब स्टिमिंग करते हैं उसके अंदर जो है उनके अपने वो जो बिहेवियर है ना उसकी अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज के हिसाब से है, तो यू कांट से नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड और उनको गाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। तो आई थिंक नाउ वी विल कम टू द एंड, एंड एंड में बस एक हमने एक वीडियो बनाया है जो वी विल जस्ट शो। अब उसका ऑडियो इज गोइंग डायरेक्टली टू यूट्यूब, सो वी विल जस्ट सी इफ वी कैन हियर द ऑडियो फ्रॉम हेयर। एक मिनट, जस्ट 1 सेकेंड। ये पेरेंट्स बच्चों का ही है ये वीडियो। नमस्कार and hello. Namaskar and hello everyone. My name is Chandra. Nobody is perfect in this world, so I am too. The best way I express myself is through singing, so here is few lines for all of us. ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंज़िल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। थैंक यू। My name is Vidyanshi. I am 8 years old. Do you know who is the richest person in the whole world? It is Elon Musk. He is the richest person in the whole world. He is also an autistic, and I am also an autistic. I would like to be like him one day. We both are no less, and we think differently. Thank you. Hello, my dear respected audience. I am so happy to share all of my arts and paintings, also my creative ideas. I want to make my animation film, and it's really amazing. It's called Star Wars Space Galaxy Wars. It's a very good film, but I need to learn animation in computer graphic design. Also, my dream is to become a Star Wars animator for my future business. And I'm already doing a painting for my money earning. I hope my audience likes my art and ideas, so wish me luck. Okay, thank you so much.
यति नो स्लैंटिंग लाइन खींचो दूसरी वेरी गुड एंड स्लीपिंग लाइन खींचो पहले स्लीपिंग लाइन खींचो पहले खींचो खींचो गुड गर्ल अरे वाह बी बनाओ बी Then stomach. colors dots लगाओ very good And I thank all of you for being here. And we would like to request my HOD, Dr. Baga, to kindly give the mementos to our panelists and first the parents, if you don't mind. First. Please come. Yes.